Good morning students, welcome once again in online classes. This is class 5th, this is class 7th SST class, and I'm going to start the 5th chapter of history, architecture as power, forts and sacred places. और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इस पर भी आप लोग एक नज़र डाल लीजिए. North Indian temples, the Sun Temple at Konark, the South Indian temples, architecture under the Delhi Sultanate, monuments by the Mamluk Sultans, monuments by the Khilji Sultans, monuments by the Tughlaq Sultans, monuments by the Lodi kings, religion architectures, Mughal architecture, Akbar's contribution, Jahangir's contribution, Shah Jahan's contribution and Aurangzeb contribution. तो ये इन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या इनकी थी, सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे. लो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर एन एक्सप्रेशन ऑफ एफ्लुएंस एंड पावर ऑफ किंग्स एंड रूलर्स. जो राजा होते थे अपने हिसाब से ही अपने इस टाइम की चीज़ों को बनवाया करते थे, वैसा उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता था, जैसा उनका माइंड सेटअप होता था. वी फाइंड वेराइटीज़ ऑफ मोनूमेंट्स आर्किटेक्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हम सब देखते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोनूमेंट्स हैं. A vast range of materials, skills and styles has been used to build the pieces of architecture which includes forts, palaces and havelis, places of worship जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, मुस्लिम्स गार्डन्स एंड वाटर वर्क्स. ये सारी चीज़ें बनवाई उन्होंने. The period between AD 100 and 1200 witnessed the emergence of new trends in art and architecture, especially in temples in North India. It was indeed a glorious age that witnessed tremendous building activity. The temple architecture evolved solely from religious consideration. This age produced a large number of magnificent structures that vary significantly in architectural style. We can classify temples into three different styles. कौन से? The Nagra or northern style, the Dravid or southern style and the Vasera or hybrid style. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के बारे में. Temple of Nagra style which developed in 5th century is characterized by the following features. सबसे पहले the image of main deity is placed in the Garbhagriha. It is a beehive shaped tower called Shikhar. The temple contains seven mandap halls जिसको कह सकते हैं. The Gopuram or gateway at the entrance of the temple is very modest. सबसे ज़्यादा modify main gate को किया जाता था. The Rajputs were great patrons of temples and gave lavish grant for their construction. Beautiful temples, especially dedicated to Lord Shiva or Vishnu, were built during this time. And among the famous temples, कौन से जैसे खजुराहो temple in Madhya Pradesh, Sun Temple or the Black Pagoda or at Konark, the Jagannath Temple at Puri, the Lingaraja Temple at Bhubaneswara and Dilwara temples of the Jains at Mount Abu, built by the Solankis. The Sun Temple at Konark. कोणार्क में है सन टेम्पल बिल्ट इन 13th सेंचुरी बाय किंग नरसिम्हदेव ऑफ गंगा डेसेंट. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम साउथ इंडियन टेम्पल्स पे. A temple of Dravid style which developed in 7th centuries has following characteristics. The image of main deity is placed in the Garbhagriha. The temple has multi-storied pyramid shaped called Viman Tower. It has lofty and intricate gateway or gopurams. The assembly halls or mandapas are pillared. Pillared पे होते थे जो भी इनके मंडप वगैरह होते थे. Some temples have a spire-like structure over the central shrine called shikhar. The Cholas and Pallavas were great patrons of art and architecture and they made significant contributions in this field. They built many temples in Tanjore, Gangaikonda, Cholapuram, Mahabalipuram and Kanchi. The Pallavas are known for their rock cut temples and the Cholas for their multi-storied pyramidical styles. जो
पल्लव्स होते थे वो रॉक कट टेम्पल्स, उनका यही पहचान थी। और जो चोलास होते थे दे बिल्ट अप मल्टी स्टोरीड पिरामिड स्टाइल्ड टेम्पल्स। द चोलास आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर ब्रॉन्ज नटराज स्टैचूज, जो भी नटराज के स्टैचूज होते थे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये सभी चोलास इसके लिए बहुत फेमस थे। और कौन कौन से टेम्पल्स हैं, जैसे कि शोर टेम्पल्स हो गए, कैलाशनाथ टेम्पल हो गया, रथ टेम्पल हो गया, ये सारे उस टाइम के कुछ टेम्पल्स हैं। द राष्ट्रकूटाज इन द डेकन्स वेर ऑल्सो ग्रेट बिल्डर्स, दे बिल्ड द फेमस रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड द एलिफेंट केव्स, द होया Hoslas and later Chalukyas too made temples in the cities of Badani, Pattadakal and Dwarsamudra, which testify for their architecture skills. फिर आते हैं आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत, क्या क्या चीज़ें थी इसमें, इनकी क्या खासियत होती थी। यूजेस ऑफ आर्क्स, domes and minarets on the sides, decoration of buildings with calligraphy and ornamental style writing, which verses from a holy Quran were engraved on the walls of buildings, use of floral and geometrical designs as well as some Indian motifs such as lotus and the bells. Their buildings were devoid of human or animal forms. Use of both red and yellow sandstones along with the marbles to add color to the buildings or monuments by the Mamluk sultans. The Quwwatul Islam Mosque in Delhi, dedicated to famous Sufi saint Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki. The Arhaiddin Jaunpura in Ajmer, the Qutub Minar in Delhi. Monuments by खिलजी सल्तनत, न्यू सिटी ऑफ सीरी, नाउ पार्ट ऑफ दिल्ली, जो कि अब दिल्ली का पार्ट है। द अलाई दरवाज़ा नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली, द दरगाह ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। मोनूमेंट्स बाय तुगलक सल्तनत, द Tughlaqabad Fort in Delhi, Firoz Shah Kotla in Delhi. Firoz Tughlaq brought two Ashokan pillars from Topra and Ambala to beautiful his capital. Hauz Khan in Delhi, several canals, dams, sarais, mosques and madrasas in and around Delhi. फिर है monuments by the Lodi kings. The Lodi rulers laid the Lodi garden in Delhi, which has the tombs of Said and Lodi rulers. They used blue tiles in their tombs. ये देखिए, यह है लोधी गार्डन। फिर आ जाते हैं रीजनल आर्किटेक्चर पे। अ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल किंगडम सच एज विजयनगर, बहमनी, फोर मारवाड़, गुजरात, जौनपुर एंड बंगाल emerged in 15th century. The Sharki rulers of Jaunpur are famous for the Atala Mosque. The rulers of Mandu built the famous Jami Masjid, Hindola Mahal and Jaz Mahal. The rulers of Gujarat built the Jami Masjid and Bibi Achyut Kuki Mosque at Ahmedabad. The Sisodis or Mewar built the Kriti Stambh at Chittor. The Rathors of Marwar founded the city of Jodhpur and built the famous fort of Mehrangarh there. The Vijayanagar rulers in the Deccan were known for their finest temple in Hampi, such as the Vithala and Virupaksha temple. The Bahmani kings built the Gol Gumbaj at Bijapur, the Jama Masjid at Gulbarg and Madras. फिर आते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर, इनका क्या था। मुग़ल आर्किटेक्चर बिगेन विथ बाबर, हु इज़ सेड टू हैव बिल्ट सम स्ट्रक्चर इन आगरा, ढोलपुर एंड ग्वालियर। अकबर कॉन्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट ग्रेट मुग़ल मॉन्यूमेंट वॉज द मौसोलियम ऑफ Humayun built during the reign of Akbar. A Persian architect, Miraq Mirza Ghias, designed the tomb. Like other Mughal monuments, it reflects the combined tradition of Central Asia, Persia and India. ये आप देख सकते हो Mausoleum of Humayun. Akbar built
a fortress places in his capital Agra. Red sandstone was inlaid with white marbles and the surfaces were ornate. Abul Fazl in his Ani Akbari mentioned that the style of buildings in Agra fort resembles that the structure of Bengal and Gujarat. Akbar went on to build the entire city of Fatehpur Sikri, in which low arcades and bulbous domes, which characterize the Mughal style, were extensively used. It was built in 1571. और एक चीज़ उन्होंने बनवाया इम्प्राइज गेटवे नोन एज द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी। फिर उन्होंने पंचमहल, बीरबस हाउस, जोधा बाईस प्लेस, द टम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई। जहांगीर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम द यूज़ ऑफ सैंडस्टोन्स टू मार्बल, लेड द फेमस शालीमार गार्डन इन कश्मीर, बहुत ही फेमस गार्डन है कश्मीर में शालीमार गार्डन, उनका निर्माण कराया था जहांगीर ने। कंप्लीटेड द टॉम्ब ऑफ अकबर at Sikandra, started the use of Petra dura, a practice in which semi-precious stones were inlaid in marble slab. Noor Jahan built the tomb of Itmadul-Dullah, her father, in her region, and also built at Shahadra near Lahore. Shahjahan contribution. Shahjahan ने क्या contribute किया? Mughal period under him is often described as golden age or age of magnificence. During this region, several splendid monuments were built, जैसे unique blend of India, Central Asian and Persian styles, extensive use of marbles, the preference or bulbous domes in curved lines instead of rectangular shapes, elaborate ornamentation through the techniques of Petra dura. Shahjahan is credited with the following architectural monuments like Shahjahanabad or Shahjahanabad. He built the Red Fort, which had administrative buildings, a palace, a garrison, an arsenal, which is made of red sandstone and was completed in 1648. The two most beautiful buildings within the fort are Diwani Khas and Rang Mahal, the famous peacock throne, studded with gold and precious stone, was installed here. The Jama Masjid, also built within the Shahjahanabad. The Shah Jahan's greatest architectural achievement is the Taj Mahal. सबसे जो बेहतरीन इनकी है आर्किटेक्चर जिसको कह सकते हैं अचीवमेंट है, दैट इज़ ताज महल, अ मॉस्यूलियम बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल। फिर उसके बाद आते हैं हम औरंगजेब कॉन्ट्रीब्यूशन पे। औरंगजेब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? द बिल्डिंग्स ऑफ औरंगजेब रीजन्स आर inferior quality. He built two mosques, the Moti Masjid within the Red Fort in Delhi and the Badashahi Mosque at Lahore. He also built a tomb for his queen Rabia ul Durrani at Aurangabad called बीबी का मकबरा। उन्होंने उसे बीबी का मकबरा नाम दिया। इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ द ताज महल बट लेस इम्प्रेसिव। ताजमहल का ही एक रूप माना जाता है बट थोड़ा कम इम्प्रेसिव है। औरंगजेब डिड नॉट पैट्रोनाइज आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ विच मेनी माइग्रेटेड टू रीजनल kingdoms. This is one of the reasons why many regional schools flourished. So ये था आपका चैप्टर हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 5, आर्किटेक्चर एज पावर, forts and sacred places. Hope you understand the chapter and enjoyed the chapter. In next video I will complete its exercises and question answers. Till then, take care. Goodbye.